ओके, अब हम चलते हैं करेक्टर लिटरल्स। करेक्टर लिटरल्स, अब हमारे पास देखो, अगर लिटरल की बात करें तो हमने शुरू में किया कि नंबर आ सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला नंबर भी हो सकता है। अब इसी तरह करेक्टर्स भी तो हम स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो उसके लिए करेक्टर लिटरल हमारे पास होते हैं और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल करेक्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे कैर एक डाटा टाइप होती है, पर ये जो ए लिखा है ये है करेक्टर लिटरल। इसमें कुछ चीज़ों की एक्सेप्शन होती है कि हम इसको बैक स्लैश या सिंगल कोटेशन मार्क में नहीं डालते या न्यू लाइन को नहीं मानते, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसमें एस्केप सीक्वेंस भी एक चीज़ आएगी, उसको हम बताएंगे कि वो भी करेक्टर लिटरल कैसे होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ किया। पर इनको याद रखना है कि ऑलवेज एंक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क, जैसे ये ऊपर दिख रहे हैं, तो ये आपने कीबोर्ड से इसको सिंगल कोटेशन के साथ काम। अब इसमें एक कन्वर्शन कैसे करेगा, जब भी ये कंप्यूटर को ये स्टेटमेंट मिलेगी तो ए इंटरनली जो है हमने यहाँ पे असाइन किया है, एक करेक्टर लिटरल इज इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द एनकोडिंग स्कीम चूजन। तो इसलिए जैसे कि हमने स्काई चूज की हुई है तो वो स्काई के अकॉर्डिंगली रूल्स के कन्वर्ट कर देगा। और अगर आजकल मॉडर्न कंपाइलर्स में जैसे हम UTF-8 भी ले लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको उस नोटेशन के अकॉर्डिंगली उस नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। ये हमने करेक्टर सेट में पढ़ा था। उसके बाद करेक्टर लिटरल्स हमारे पास ओनली वन करेक्टर है और वो ज्यादातर कैर टाइप का ही हम लेते हैं। दिस इज अनलाइक सी। हाँ, ये अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें अगर हम उसका साइज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो साइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो कैर टाइप का आएगा साइज, यानी कि अगर हम लिखते हैं साइज ऑफ ए तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, क्योंकि कैर का साइज होता है 1। पर अगर यही स्टेटमेंट अगर हम सी में लिखते हैं तो हमें मिलेगा जो साइज इंट का होता है। जैसे कि आजकल मॉडर्न कंपाइलर्स में वो 4 होता है, कईयों पुराने वालों में 2 होता है, तो वहां पे 2 भी मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास वाइड कैरेक्टर लिटरल भी होते हैं। तो वाइड कैरेक्टर लिटरल हम उसके लिए एक नई डाटा टाइप आ गई है, VWAR_T इज इक्वल टू। तो उसके लिए हम लिखेंगे, याद रखना पहले एल लिखना कैपिटल और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं -U, यू मतलब यूनिकोड के लिए, 0, 3, 6 और 60 लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं और एंड में सेमीकोलन। तो ये भी एक हमारे पास न्यू जो रिप्रेजेंटेशन आई है डब्ल्यू कैर वाली _T, ये मॉडर्न कंपाइलर C++11 में अवेलेबल है। Now let's see a program of character literal. As you can see, we have taken a character literal A of sky value 97. It is assigned to a variable ch1 of type char. Okay, so rest code is simple, hash include using namespace and all that. So we have printed this value and let's see what will be the result. Let's first save it and run it. Save. Okay, it is getting you the value. Now we can assign char literal in different ways, but before moving into that particular part, let's see what is the size of char literal in A. As I've told you that in this case it will be having the same size as of char, so you can see the size is 1. And if we have the same in C, it would have been that of int. Now if you want to print what is the sky value, you have to typecast it with int. As you can see, this is the variable and this is the typecasting. Now I will see the integer value of this particular A character A and it turns out to be 97. Similarly, you can see over here that we can have other ways to represent it, like ch2. If I give it, let me change it to ch2, it will give you the same. Then you can also represent the character like this, and like this. These are the various ways by which you can print all these values. Now this is a special type of literal, that is a wide character literal, and its size is that of 4 in most of the compilers, but it can sometimes print 2 also. So let's see what is there in this case. In this case of 7, let's see, and
7 7 and okay, let's change over here also, and let's see what is the value. Save it and run it. So you can see here, okay, it's just not, I've changed, yes. So it is showing some conversion, but before that I can use over here, and it is a wide character literal that has been assigned and converted to char. Now let me change it to wchar underscore t as its data type. Okay, and then no, I should make it char because then I have to change lot of things. I change it to wchar underscore t as a new data type and see what will be the output. So it is showing some different size, although it's not 4 over here, but it is generally 4. Okay, so you can see over here, this is a new data type that has been introduced, and these are the various things, ways by which I can represent. I have checked the size and all that. Okay, thank you. अब हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस की। अब ये क्या होता है कि कई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आप कीबोर्ड से नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उनको डालने के लिए जैसे कि बैक स्पेस हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, तो जब हमने कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे एंटर करेंगे, है तो वो भी एक सिंगल कैरेक्टर। तो इनको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस या बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, जो की खासियत क्या है कि ये बिगिन होता है बैक स्लैश से, इसलिए इसका नाम बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। और ये जो इसके आगे करेक्टर लिखते हैं तो उसको भी स्पेशल मीनिंग दे देता है। मीनिंग देने का मतलब क्या है कि उसका मीनिंग रीडिफाइन कर देता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमने स्लैश एन लिखा तो वो क्या करेगा, एक न्यू लाइन करेक्टर डाल देगा। इससे क्या होगा, जब भी वो एनकाउंटर होगा तो वो हमारा कर्सर स्क्रीन का जो है नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ये हम काफी ऑफन सी में यूज करते आए हैं। फिर स्लैश टी क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल टैब डाल देगा जिससे कर्सर एक टैब पोजीशन आगे निकल जाएगी। फिर स्लैश आर से कैरेज रिटर्न, ये क्या करता है, स्क्रीन स्क्रीन कर्सर को बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन पे ले जाता है। फिर बैक स्पेस क्या करेगा, हमें कर्सर बैक वन स्पेस ले जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी आता है जो कि प्रिंट करता है क्वेश्चन मार्क। फिर होता है सिंगल कोटेशन मार्क जो हमें सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोट जो है अगर हम डालना चाहते हैं फिर, और डबल कोट के लिए डबल कोट होगा। फिर उसके साथ बैक स्लैश होता है जिसकी मदद के साथ एक ब्लैक स्लैश कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी प्रोग्राम के साथ। Now let's see a program of escape sequence as we have already discussed. Now we have added slash n over here, and we have added slash t over here and a backspace character. So let's see what will be the output. Let me save it and run it. Okay, just sometimes give error. Okay, it is showing me the output. You can see over here wow followed by a new line character means shift to the next line. Then we have a tab space. You can see in the output we can see have a tab space. Then it is showing me that it has moved one space back, so M has been removed and it has resulted in class. Similarly, I can check for slash carriage return that what will be the answer. So let me remove this comment. I have typed it earlier because it will make a little lesser time. Now let's see. Okay, so you can see here that hello is being removed and only the program is displayed over here just because of the carriage return character. Now let's see what happens if another line is added over here. So you can see it includes a slash single quotation mark, so it has added a single quotation mark followed by a question mark after C++, followed by a colon, followed by double slash, so it has added one slash for it. And this is how the escape sequence work. So we have used slash n over here, slash t, slash b, slash r, followed by slash question mark, slash single quote,
and followed by double slash. So you can see over here what will be the output. Thank you. अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया है स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, और इसकी खासियत क्या है कि इट इज इंक्लोज्ड विद इन पेयर ऑफ डबल कोट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एज लिखा हुआ है और ये वैल्यू है आउटपुट इज, तो ये सारे क्या डबल कोट्स के अंदर हैं, इसलिए इनको स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। और इसमें एक जो नल कैरेक्टर होता है वो हम ऑलवेज अपेंड करते हैं उस स्ट्रिंग लिटरल के एंड में, ताकि एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाए। तो इसलिए टोटल लेंथ जो होती है ना स्ट्रिंग की, वो होती है जितने कैरेक्टर्स हैं +1। ये चीज याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बेसिकली कैरेक्टर एरेज को इनिशियलाइज करने के काम आता है। जैसे कि आपने लिखा कैश स्ट्रिंग हेलो, तो इस तरह से ये करेक्टर एरेज को इनिशियलाइज, एरेज का कंसेप्ट हम आगे जाके कभी पढ़ेंगे, जब भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा तो वहां पे ये यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड इकट्ठा लिखा सेपरेटर से, तो ये बन जाएगा हेलो। तो इसका मतलब है एडजेसेंट स्ट्रिंग लिटरल्स को हम कंबाइन करते हैं, कंकैटिनेट करते हैं, और कंकैटिनेट होने के बाद वो रिजल्ट हमें दे देता है। फिर अगर हमने डबल कोट्स डालना है विद इन द स्ट्रिंग लिटरल और हमें एस्केप सीक्वेंस के साथ डालना है, तो हमें इस तरह से वो डालना पड़ेगा, और इस तरह से हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि इस तरह से हमारे पास अलग अलग स्ट्रिंग लिटरल। Now this is a program to show string literal. Now in this you can see that we have added a string literal as you say within double quotes, and this is being assigned to a variable of type string. Now when we print this value, let's save it and run it to check what will be the result. Okay, when you select highlight, it happens sometimes. Okay, so it is showing you as you say is being displayed. You can also assign some other values like a number, but a number within double quotes is treated as strings. So let's see what will happen now. So you can say here, okay, I have to change this value to 2. So you can see over here 278 is being printed, and similarly we can check for others also. So I say that you can try it. Now this is very important. Let me show you the output of this, because it concatenates the strings. As you can see over here, it will concatenate it. So you can see this concatenation is possible just because it is a feature of string literal. So you have seen that this is how string literal works, but always ensure that there are no conflicting declarations. A string literal can be also assigned by a character array, or over here you can see this is a character array that I have declared my string 4 followed by hello. It is being assigned. Now this is a value, it will count the total number of characters in this particular program. For the time being, you can just think of that it is a program, and we have assigned a string literal over here like this, and that is there, and we will be counting. If you have come across through C, then you can come across that what is I'm saying, because it is something, because every string has to end with slash and /0. So this is an indicator, the last character till it reaches, it will count the characters. So let me see what will be the length of the string that is printed. Okay, I have not to select it. It always happen. I have to place my cursor at right position. Okay, so you can see that it is saying that hello is the character, and the length of the character is 5. So this is another way, and this is how string literal works. फिर हमारे पास C++ में अनलाइक C यहाँ पे boolean literal भी अवेलेबल है। तो boolean literal क्या करते हैं, boolean literal इसलिए boolean है क्योंकि उसमें सिर्फ bool वैल्यूज या समझ लो true and false वैल्यूज आ सकती हैं, और वो boolean डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग आ सकते हैं क्योंकि वो C++ में अवेलेबल है। तो कॉन्स्ट वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते। तो bool एक b नाम का वेरिएबल है, पर इसमें जो लिटरल है उसकी वैल्यू है ट्रू। याद रखना ट्रू को लोअर केस में जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू ऐसे नहीं लिखना होता। ठीक है, तो ये हमारे सारे लिटरल्स थे।
इसके अब प्रोग्राम हम देखते हैं। ओके, now this is a program of bool literal. This is exclusive to C++. You can see here I have added a bool followed by a variable name, and this is the bool literal. That is why it is showing over here. You can see over here. Now if I print the value, I have shown it to be flag just to show you the value. It will show me the value, and let's see what will be the output of this particular program. Now it is printing 1, but if you want the value to be something like Boolean value, true or false, then you will have to ensure, let me uncomment this and check for the flag variable that I have used. So there will be two different values, and for this statement it will be showing something different. So let's try what will be the value. First save this value and then run it. So you can see that if with, and for this I have this bool alpha, it is IO manipulator, and for this I have included this particular IO manip file. This is essential, otherwise it will not print true, it will print 1 or 0, which is just to print the true value of this. So this bool value will be printed. Similarly, you can ensure that if you want to combine it with other operators, this various operators will be discussed later. Okay, this is showing me this because I have removed. Let me add it. Now it will work. So if I have to show it like this, let's see what will be the result. Let me save it. So I've shown you the result. It is something like result is showing in 1 because we have not added the alpha value, bool value. But once it is added, the all next variable will be assumed to have that particular result shown in that format itself. So here and double AND operator has been used. Then this particular operator OR operator has been used. So this way I am checking the condition whether the result will be true or false. So accordingly I can be given the value, but this value is again a Boolean value, and it is result this value result will be shown in 1 or 0, and after that I have used bool alpha, which is a manipulator. It will be showing next values also in true and false. So thus Boolean values are used in Boolean, all that operators that return Boolean values. Boolean literals are returned in all that operators which return Boolean values. Okay, thank you.